morning, dear student. This is class 12th and I am Anjali Singh. Today I am going to start the topic actually which we read earlier also, like sharpness of resonance and quality factor. Quality factor is a new topic, but resonance is a old topic. Yeah, what is resonance? As I said to you earlier, resonance means the condition. Resonance means the condition where we are getting the maximum value of current. If we are getting the maximum value of current, it means the value of resistance will be very low. The value of resistance will be very low, and it is only possible at the condition of resonant frequency. Means the value of frequency is also specific, and that specific value of frequency is known as resonant frequency. Okay, for explaining this and for derive this, I am going to make a diagram. Actually, it's a graph. So, I am going to make it. This is the graph. Okay, through graph, I am going to explain you once again. Current, amplitude. इनको जब बना लेते हैं फिर ओके देखते हैं current amplitude, and this is the omega is equals to omega naught. ठीक है? R1 R2 R3. I think it's clear that every point should meet at the clear, student. So, as you can see, when the value of resistance will get maximum, it means at the point of R1, the value of current will be low. The value of current will be low, and as the value of R1 means resistance, means the value of R will getting lower and lower. Will getting lower and lower and will getting lower and lower. कम से कम कर दिया. So with the little variation in the value of frequency, with the little variation of in the value of frequency, you will get the maximum value of current. ठीक है? This is the point where we can say we occur the sharpness. ठीक है? और resonance. ठीक है? यही वो पॉइंट है जहां पर मुझे शार्प मिला. मेरा ग्राफ कैसा हो गया? शार्प हो गया है. रेजोनेंस तो यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ शार्प रेजोनेंस है. मतलब कि सबसे ज्यादा करंट की वैल्यू है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड द ग्राफ शुड बिकम मोर एंड मोर शार्प. बात समझ में आ रही है? Here in this case, the little variation of frequency, and you know this omega naught is the angular resonant angular. This is the angular frequency and this is the resonant angular frequency. Resonant angular frequency. बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? Resonant angular frequency. And you know the value of R1 is greater than R2 is greater than R3. तो I'm going to drop it because यहाँ पर derivation लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है? तो मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ. यहाँ पे कहीं एडजस्टमेंट करके R1 greater than R2 greater than R3. Okay, means the least value of resistance is R3. You know, when we are drawing this graph, so we are getting the value of angular frequency in two ways. In two ways, we are getting the value of angular frequency in two ways. So in the first way, that will be the omega 1 is equals to omega plus del omega. Clear, student? See, omega plus del omega. We will get the value omega plus del omega means, yeah. And in case of omega 2, second, omega naught minus del omega. ठीक है? समझ में आ रही है बात? मतलब कि एक बारी वेरिएशन में मुझे पॉजिटिव मिलेगा, एक बारी वेरिएशन में मुझे नेगेटिव मिलेगा. So what will, and if I am going to subtract this, so I am getting the value of omega. डायरेक्टली मैं इसको समझा दूंगी, फिर रब कर देंगे. ठीक है? तुमको कॉपी करने के लिए दे दूंगी. ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू, वैल्यू रख दो, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा
minus omega naught minus del omega. Bracket open करने पे this is got cancel out and this is got 2 del omega. This is the bandwidth. This is the bandwidth. Okay, student, this is the bandwidth when we are getting the sharpness. In case of sharpness or in the case of resonance, this will show you the bandwidth. Okay, students, so please start copying it because I am going to rub it. Start, pause the video and start writing it. Okay. Now I am going to start my derivation, means expression. अब मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ? एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन कैसे लिखना है? एक्सप्रेशन को लिखने से पहले मैं समझा देती हूँ कि मैंने एक्सप्रेशन में लिया क्या है. What I took in the expression. The current is equal to the current in the circuit is equal to the 1/√2 times the current amplitude. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है? The current in the circuit is 1/√2 times the current in the circuit is 1/√2 times the current amplitude. Means मैंने डिराइव कर लिया था वहां पर करंट की वैल्यू I is equals to E upon √R1 square plus omega L minus 1/omega C is equals to 1/√2. बात समझ में आ गई सबको? देख लो ये वैल्यू, ठीक है. और ये करंट एम्पलीट्यूड है, मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी पे मुझे ऑब्टेन हुआ है? ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे. मैं लिख देती हूँ फिर रब कर दूंगी. When you will copy in your notes तो लिख लेना at omega naught. ज्यादा स्पेस देगा इसलिए मैं इसको रब कर दे रही हूँ, ठीक है. At omega naught you will get this value of current. मतलब ये रेजोनेंस वाला कंडीशन हो गया. अब you know E is E upon √over this R square plus omega L minus 1/omega C whole square. The value of I is E by R. This is got cancel out and you will get the value R square plus omega L minus 1/omega C whole square. You are very much familiar with the word omega L C. Okay, ये कितना हो जाएगा? Is equals to √2R. देखो समझ में आ रहा है? अब इस रूट को मैं समझाते हुए सॉल्व करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू राइट वन स्टेप मोर, ओके, जो कि अननेसेसरी होगा. दिस रूट, ये रूट और ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा. मैं क्या करती हूँ, इस रूट को एक्सपैंड करती हूँ, आर में भी लेके जाती हूँ. तो कितना हो जाएगा? √2R. ये कितना हो जाएगा? √2R स्क्वायर. ऐसा कर सकते हैं. रूट इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, आर का भी हो गया. बात समझ में आ रही है? ठीक है. इस आर को मैंने क्या किया है? एक्सपैंड कर दिया रूट आर में भी. तो आर को भी रूट के अंदर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा. सो दैट स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर अगेन. कब कर रही हूँ? तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा वैल्यू? √R square plus omega L minus 1/omega C whole square is equals to 2 is equals to √2R square. रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? R square plus omega L 1/omega C whole square is equals to 2R square. Okay, student, transferring 1/omega C whole square is equals to R square. ट्रांसफर करेंगे तो R square माइनस होगा तो R square. Again स्क्वायर कैंसिल आउट. omega L minus 1/omega C is equals to R. Now I am going to use the value of omega. ध्यान से देखो स्टूडेंट. Now I am going to use the value of omega. ओमेगा की जगह हम इस ओमेगा को ओमेगा 1 मान लेते हैं और इसकी जगह हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है? ओमेगा नॉट प्लस जेल ओमेगा L minus 1/omega naught plus del omega C. Is it correct? No. C के साथ मैंने क्या यूज करना है?
माइनस यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? नो, इस वैल्यू विल बी सी अगेन। अभी जब ऊपर जाएगा तब ये नेगेटिव होगा। इज इक्वल्स टू आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ब्रैकेट क्लोज। दिख रहा है? अब मैं इसको रब करके चलूंगी। सबका कॉपी हो गया होगा? अभी स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज करेंगे वैल्यू को। ठीक है, या ओके, वी आर गोइंग टू राइट दिस ओमेगा एल। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन यूज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू को अब हम यहाँ से ओमेगा ओमेगा नॉट एल कॉमन यूज करते हैं। अब इसको सबसे पहले ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं। ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा एल, ये कितना हो जाएगा? अब जब हम इसको ऊपर कर लेंगे, तुमको पता है कि जब ये ओमेगा सी, ये मैंने बताया था, ओमेगा नॉट एल में लिख दे रही हूँ, फिर रब कर दूंगी। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, जस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट सी। जब ये ऊपर जाएगा ये वैल्यू, तो ये ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुमको पता है। तो कितना हो जाएगा ये? ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ये इनवर्स एल इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देंगे? ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा एन माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा, ये स्क्वायर इसमें, ये माइनस यहाँ ट्रांसफर होगा, तो कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू आर। पहले ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू, समझ में आ रही है वैल्यू? ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली वैल्यू? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ओमेगा नॉट एल। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा, यहाँ से भी ओमेगा नॉट एल क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल ओमेगा बाई ओमेगा। ओमेगा नॉट हो जाएगा ना, ओमेगा नॉट कॉमन लेना है, ओमेगा नॉट इज टू आर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। पूरा ओमेगा नॉट हो जाएगा। मैं इस फ्रीक्वेंसी को भी मिटा दे रही हूँ, पता होना चाहिए तुम्हें ये क्या है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा नॉट एल। इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? ये पूरा कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, पूरा कॉमन ले लिया है, पूरा कॉमन ले लिया है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस इज 1 1 will going to cancel out and this will be 2 del omega by omega naught is equals to r। कैंसिल हो जाएगा, 2 del omega L is equals to R. Clear student? Now the last is del omega. Sorry, I am writing down and down. R upon 2L. ध्यान से देखो इसको, फिर इसको रब करना पड़ेगा। del omega क्या है? del omega is equals to R upon 2L। दिख रहा है? अब इसको रब करते हैं, because we have to write more and more. Okay, now अब क्या करेंगे? I am going to do the little bit adjustment only, nothing else. Okay, so this value will be going down. It will be del omega 1 हो जाएगा, is this will be 2L by R. इस 2 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ, 1 by del omega 2 del omega L upon R. I am going to multiply it omega naught on both the sides. Omega naught, omega naught. This is the value of sharpness. This is the value of sharpness. Okay, this is the value of sharpness of resonance. I got the value, sharpness of resonance. This value shows the sharpness of resonance. Clear student? Omega naught L by R is the value of sharpness of resonance. Now, what is quality factor? Quality factor is shown by Q. Quality factor is shown by Q. So, what is quality factor? Actually, quality factor is defined as how much voltage provided. How much voltage provided and how much
voltage drop. It is actually gives the relation, or you can say ratio, how much voltage drop across the resistor when anyone applies a वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. कितना वोल्टेज मैंने उसको ऑफर किया है तो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस कैपेसिटर. सो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप किसके अकॉर्डिंग, एल और सी के अकॉर्डिंग, एंड वोल्टेज अप्लाइड या अप्लाइड वोल्टेज एक ही बात है. ठीक है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई किया था. सो यू नो इफ आई विल टेक इट एज एल तो कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू I XL, this will be I R, this cancel out, XL by R, this is the value of XL by R. You know XL is equals to omega L by R. This Q is equals to omega. This Q is equals to omega L by R, and this omega is actually a resonant angular frequency. ये सारा कुछ हमको resonant angular frequency पे ऑब्जेक्ट हो रहा है. Again इसको रब करना पड़ेगा. This is actually getting at the resonant frequency. Now, yeah. Now, you know this value of omega naught. You know the value of omega naught we discussed in the previous derivation. That is equals to 1 upon root over LC. Now I am going to put it in the value. Omega naught की value कितनी हो जाएगी, 1 upon root over LC, and this will be L by R. You know this is root L. Root L will cancel out with L. So this will be root L. दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, अगर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा तो रूट एल ऊपर बचेगा, ये कितना हो जाएगा रूट सी, और ये कितना हो जाएगा आर. दिख रहा है रूट एल, दिख रहा है ये इतना हो जाएगा. अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रही हूँ फॉर माय कन्वीनियंस. या रूट ओवर एल बाय सी, और सॉरी दिस विल बी लाइक दिस 1 upon r. I only rearranged it. Otherwise this value is also correct, no problem. This is the quality factor and this is the sharpness of resonance. We got the final result of sharpness of resonance and quality factor. So student, this is very important derivation. That is why I took whole derivation in a one time only. ठीक है, otherwise I will take sharpness of resonance first and then I will take the quality factor. But this is very important derivation and this is an interlinked topic. तो quality factor तुम्हें कब ज़्यादा मिलेगा? When you will get the quality factor high, when the inductor value, when the resistance first we will take it in terms of resistance. When the R is low, कब तुम्हें मिलेगा? When R is low. High कब मिलेगा? Quality factor R is low, L is high, and omega is low. Omega not C. मतलब कि कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस कम होगा या यू कैन से, एंड इंडक्टेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस भी कम होगा. तो तुमको इन तीन कंडीशंस पे तुमको क्वालिटी फैक्टर कैसा मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर. सो प्लीज डू इट, रिवाइज इट once twice at your home, and if you have any doubt please ask me in the WhatsApp. Okay student, thank you. This is all for today's video.